Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Historical Development of Computers. In this chapter, you will learn about abacus, Napier's bone, Pascaline, stepped reckoner, Jacquard loom, earthmometer, reference engine, analytical engine, tabulating machine, Z1, Antonov Berry computer or ABC, Howard Mark I, ENIAC, EDVEC, EDSEC and UNIVAC. The word computer has a very interesting origin. It was first used in the 16th century for a person who used to compute, that is, do calculations. The word was used in the same sense until the 20th century. Women were hired as human computers to carry out all forms of calculations and computations. By the last part of the 19th century, the word was also used to describe machines that did calculations. The modern day use of the word is generally to describe programmable digital devices that run on electricity. As a result of the various improvements to the development of the computer, you have seen the computer being used in all areas of life. It is a very useful tool that will continue to experience new developments as time passes. देखिए कंप्यूटर का जो वर्ड है इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन है इसका. तो उसको पहले 16th सेंचुरी में यूज़ किया गया था उस पर्सन के लिए जो कंप्यूट करता था, यानी कि जो कैलकुलेशंस करता था. तो फिर वर्ड को सेम सेंस में यूज़ किया गया अंटिल द 20th सेंचुरी. वुमेन को हायर किया जाता था एज ह्यूमन कंप्यूटर्स कि वो हर फॉर्म ऑफ कैलकुलेशंस को करें, कंप्यूटेशंस करें. ओके, एंड बाय द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी द वर्ड जो है, ये जो वर्ड है उन मशीन्स के लिए भी यूज़ किया जाने लगा जो कैलकुलेशंस करते थे. ओके, अब देखिए आज के टाइम पे हम ये जो वर्ड है वो जनरली हम यूज़ करते हैं कि वो प्रोग्रामेबल डिजिटल डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, राइट. अब बहुत सारे वेरियस इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. ठीक है, तो कंप्यूटर आपको पता है कि इस टाइम पे हर जगह यूज़ किए जा रहे हैं. काफ़ी पावरफुल टूल है और इसमें न्यू डेवलपमेंट होते ही रहेंगे जैसे जैसे टाइम पास आएगा. To understand it better, let us learn the history of the computer. The first ever counting device was used by the primitive people. They used sticks, stones and bones as counting devices. As human mind and technology improved with time, more computing devices were developed. Some of the popular computing devices, starting with the first to recent ones, are described below. जो पहला counting device था, आपको पता है वो primitive लोगों ने यूज़ किया था. एक्चुअल में वो स्टिक, स्टोन्स और बोन्स का यूज़ करते थे एज काउंटिंग डिवाइस. फिर इसके बाद ह्यूमन माइंड में डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, तो बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस आए. ओके, नंबर 1, abacus. The history of computer begins with the birth of abacus, which is believed to be the first computer. It is said that Chinese invented abacus around 5,000 years ago. It was a wooden rack which had metal rods with beads mounted on them. The beads were moved by the abacus operator according to some rules to perform arithmetic calculations. अच्छा, जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की एक्चुअल में वो शुरुआत उसकी होती है abacus के बर्थ के साथ, जिसको पहला कंप्यूटर माना जाता है. और चाइनीज़ ने abacus को लगभग 5,000 साल पहले इन्वेंट किया था. एक वुडन रैक होता है जिसमें मेटल रॉड्स होती हैं, इसमें बीड्स होती हैं आपको. ओके, और बीड्स होती हैं उनको मूव किया जाता है बाय द abacus ऑपरेटर. मतलब कुछ रूल्स होते हैं उसमें, मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के, उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट, Napier's bones. It was invented by John Napier in 1617. It allowed the operator to multiply, divide and calculate a square and cube roots by moving the rod around and placing them in a specially constructed bone. अब इसके बाद Napier's bone का इन्वेंशन हुआ जिसे जॉन नेपियर ने किया था 1617 में. अब इसमें जो आपका मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और यहाँ तक कि स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स भी निकाल सकते थे. जस्ट क्या करना था कि रॉड्स को मूव करना होता था और उनको प्लेस करना होता था एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड में. ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एबेकस इज स्टिल यूज इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया और जापान. तो देखिए इन 3 कंट्रीज में एबेकस जो है वो आज भी यूज़ किया जाता है. पास्कलाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन. It was invented in 1642 by a French mathematician philosopher Blaise Pascal. Pascal invented this machine to help his father, a tax accountant. It could only perform addition and subtraction. It was a wooden box with a series of gears and wheels.
It is believed that it was a forced mechanical and automatic calculator. अच्छा, इसके बाद आपका पास्कल लाइन आया, इसको अर्थमेटिक मशीन या एडिंग मशीन भी कहा जाता था. तो इसको इन्वेंट किया था 1642 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा जिनका नाम था ब्लेजी पास्कल. तो ये मशीन का इन्वेंशन उन्होंने अपने फादर की हेल्प करने के लिए किया. वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे. तो यहाँ पे सिर्फ लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता था. स्टेप्ड रेकनर, it was developed by a German mathematician philosopher Gottfried Leibniz in 1671. It was a digital mechanical calculator which was called the stepped reckoner, as instead of gears it was made of fluted drums. इसको डेवलप किया था एक जर्मन मैथमेटिशियन थे 1671 में. तो ये आपका डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसको कहा गया स्टेप्ड रेकनर, क्योंकि इंस्टेड इसमें गियर्स की जगह ये बना हुआ था फ्लूटेड ड्रम से. Jacquard loom. It was a mechanical loom invented by Joseph Mary Jacquard in 1801. It was an automatic loom controlled by punched cards. Jacquard loom was a first machine in which the concept of punch cards was used. The punch cards has the ability to store information in them. This ability to store information was what helped spark the computer revolution. ये आपका मैकेनिकल लूम था जिसको जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इन्वेंट किया था. और ये आपका ऑटोमेटिक लूम था विच वॉज कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड. तो ये पहली मशीन थी जिसमें आपका पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था. अब देखिए जो पंच कार्ड्स हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं. ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, a punch card is a piece of stiff paper that can be used to contain digital data represented by the presence or absence of holes in predefined positions. पंच कार्ड एक्चुअल में आपका कुछ नहीं, एक स्टिफ पेपर होता है जिससे आप डिजिटल डेटा को रख सकते हैं. और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? बाय द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ होल्स जो कि आपके प्री डिफाइंड पोजीशंस पे होते हैं. राइट. अर्थमोमीटर, इट वाज अ मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कॉल्मोर इन 1820. It was a first reliable, useful and commercially successful calculating machine. The machine could perform the 4 basic mathematical functions. It was also the first mass-produced calculating machine. देखिए आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसे थॉमस डी कॉल्मर ने इन्वेंट किया था 1820 में. ये पहला रिलायबल, यूजफुल और कमर्शियली सक्सेसफुल कैलकुलेटिंग मशीन थी. ओके, ये इसमें 4 बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते थे और ये पहला मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन था. डिफरेंस इंजन. In 1822, it was designed by Charles Babbage, who is known as father of modern computer. It was a mechanical computer which could perform simple calculations. It was a steam-driven calculating machine designed to solve tables of numbers like logarithm tables. इसको डिज़ाइन किया गया था 1822 by Charles Babbage, जिन्हें कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है. राइट. ये मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि सिंपल कैलकुलेशन कर सकता था. ये स्टीम ड्रिवन था, स्टीम से चलता था. ओके, ये सॉल्व करता था जैसे टेबल ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथम टेबल्स. क्लीन अप. व्हाट इज द यूज ऑफ नेपियर्स बोन्स? यू विल आंसर इट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन. This calculating machine was also developed by Charles Babbage in 1833. It was a mechanical computer that used punch cards as input. It was capable of solving any mathematical problem and storing information as a permanent memory. इसको भी चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था. ये मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें आपके पंच कार्ड्स एज इनपुट यूज़ किए गए. अब ये कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था. ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर वाज ऑसबॉर्न 1. पहला पोर्टेबल कंप्यूटर जो था उसका नाम था ऑसबॉर्न 1. नेक्स्ट, टैबुलेटिंग मशीन. It was invented in 1890 by Herman Hollerith, an American statistician. It was a mechanical tabulator based on punch cards. It could tabulate statistics and record or sort data or information. इसको 1890 में इन्वेंट किया गया था बाय एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन. ये मैकेनिकल टैबुलेटर था जो कि पंच कार्ड पे बेस्ड था. ओके, अभी क्या करता था कि इससे स्टैटिस्टिक्स को टैबुलेट किया जा सकता था, रिकॉर्ड किया जा सकता था, इसमें डेटा को या इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता था. ओके, Z1. It was the first programmable computer created by
Konrad Zuse in Germany from 1936 to 1938. To program the Z1 required that the user insert punch tape into a punch tape reader and all the output was also generated through punch tape. ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसका नाम था Z1 और उसको क्रिएट किया था कॉनराड ज़्यूस ने 1936 से 1938 के बीच में. तो जो प्रोग्राम Z1 को प्रोग्राम करने के लिए यूज़र को पंच टेप को इंसर्ट करना पड़ता था एक पंच टेप रीडर पे. ओके और जितना भी जो आउटपुट आपका जनरेट होता था वो भी पंच टेप के ही थ्रू होता था. नेक्स्ट वन इज एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर और ABC. It was a first electronic digital computing device. It was invented by Professor John Atanasoff and graduate student Clifford Berry at Iowa State University between 1937 and 1942. ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस था और इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर जॉन एटनासॉफ ने और एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जिनका नाम था क्लिफोर्ड बेरी. ओके हार्वर्ड मार्क 1. इट इज ऑल्सो नोन एज IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर ASCC. It was invented by Howard H. Aiken in 1944. It was the first electromechanical computer. हार्वर्ड मार्क 1 को IBM ही कहा जाता है और इसको इन्वेंट किया था 1944 में. पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था आपका. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first electronic general purpose computer. It was completed in 1946. It was developed by John Presper Eckert and John Maclay. इसकी फुल फॉर्म है देखिए ENIAC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था. ये कंप्लीट हुआ था आपका 1946 में और इसको डेवलप करने वाले दो लोग थे जॉन प्रेस्पर एकर्ड एंड जॉन मैकले. नेक्स्ट EDVEC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वाज आल्सो इन्वेंटेड बाय जॉन मैकले एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ड. इट वाज अ सक्सेसर टू ENIAC. It had about 7,585 kilograms weight and occupied 45.5 square meters area. It had an internal memory for storing programs using vacuum tubes. देखिए EDVEC इसके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसको इन्वेंट किया था अगेन जॉन मैकले एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ड ने. ये एक्चुअल में ENIAC का सक्सेसर था और इसका वेट देखिए कितना ज़्यादा था 7,585 किलोग्राम्स और इसने कितना सारा एरिया ऑक्यूपाई कर रखा था. इसमें इंटरनल मेमोरी होती थी प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए वैक्यूम बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स. Now, EDVEC stands for Electronic Delay Storage Automatic Calculator. It was world's first practical stored program electronic computer. It was created at the University of Cambridge in England by Professor Maurice Wilkes in 1949. EDVEC यानी कि Electronic Delay Storage Automatic Calculator पहला वर्ल्ड का पहला प्रैक्टिकल स्टोर्ड प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में क्रिएट किया गया था बाय प्रोफेसर मॉरिस विल्किस. ओके UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. It was also invented by John Maclay and John Presper Eckert. It was the first successful electronic digital computer for commercial purpose. It could handle both numeric and textual information. UNIVAC की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और अगेन इसको इन्वेंट किया था जॉन मैकले एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ड ने. पहला सक्सेसफुल डिजिटल कंप्यूटर था कमर्शियल पर्पस के लिए. ओके ये न्यूमेरिक और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन दोनों को ही हैंडल कर सकता था. Summing up, the word computer was used in the 16th century for a person who used to compute, that is, do calculations. Napier's bones was invented by John Napier in 1617. Pascal line is also known as arithmetic machine or adding machine. Jacquard loom was the first machine in which the concept of punch cards was used. Tabulating machine was invented in 1890 by Herman Hollerith, an American statistician. ENIAC, EDVEC, and UNIVAC were invented by John Maclay and John Presper Eckert. UNIVAC was the first successful electronic digital computer for commercial purpose. It could handle both numeric and textual information. Children, I hope आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स समझ आ गया कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, राइट? एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.